Hey guys, hi, hello, and welcome to my cricket world analysis with Yashashvi. What are you waiting for? Watch the intro. I know that was a very bad interaction because, see, I thought this is the only way, right? Because every time I used to make that sad intro, boring intro, I thought just to make it somewhat a bit funny. I don't know how much it turned out to be funny. Anyways, let's just leave all those. So today my topic is going to be about the top 5 performances. Like last time मैंने बनाया था सिर्फ uncapped players के लिए ही because they were pretty exceptional यार. So I just thought to just dedicate a video for the uncapped players. But today this video is going to be about except this uncapped players. मतलब कोई भी uncapped player इस वीडियो में नहीं है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दैट बिकॉज अगर आप वो वीडियो नहीं देखा और ये वीडियो देख रहे हो तो यू माइट जस्ट थिंक लाइक वो यशस्वी यू डिडंट से अबाउट रुद्राज गायकवाड, यू डिडंट से अबाउट हर्षल पटेल. बट काम डाउन गाइस, मैंने वो सब के लिए एक वीडियो बना दिया और आपको आ भी गया होगा, 2-3 दिन भी हो गए होंगे. सो दैट्स व्हाई एंड इन दिस वीडियो यू आर नॉट गोना सी एनी अनकैप्ड प्लेयर्स. हैशटैग डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहे वाली हूँ कि not gonna see any uncapped players and they are gonna be the players who are playing for Team India or for any other foreign countries. So like that, okay, and there are gonna be only 5 but I have 6. Every time I just get confused in the top 5 में जो 5वां नंबर पे जो आते हैं ना उसके लिए like I always have the doubt in mind. So इसीलिए 6 लोग होने वाले but टाइटल में तो 5 ही दिखेंगे. Anyway, so a lot of chapper. So finally, let's just start the video. Okay. So today my first player, the top 5 performances में से the first player which I am choosing is of course from the Punjab Kings because आपको ये देख के आपको पता चल रहा होगा. The player is from Punjab Kings. It's none other than KL Rahul, guys. It's none other than KL Rahul. मतलब he was so much awesome in today's, like, not only every time whenever he plays for Punjab, exceptional always. So he was just a 10-run shot to get a orange cap. So this is KL Rahul with 13 matches, 626 runs. Oh my god. Every year he makes 500 plus runs, 600 plus runs. This is called the batting of KL Rahul. And कल practice match हुआ था जो कि मैं वीडियो नहीं बनाई, क्यों वो मैं लास्ट में दूंगी वीडियो में. तो उस मैच में भी he made some 50 बनाया था. So pretty exceptional. Okay, so I hope you understood why KL Rahul is that a big player for Punjab Kings. And थोड़ी बहुत ऐसे न्यूज़ भी आ रही है कि KL Rahul is leaving Punjab. ऐसा न्यूज़ तो आ रही है पर हमको ये पता नहीं है कि उस न्यूज़ में कितना सच्चाई है, right? Let's move on to our next player. हिंट दे दूँ? देख लीजिएगा, ये है हिंट. He is from Royal Challengers Bangalore. Okay. So, इस फोटो में तो आपको प्लेयर दिख रहा है guys. He's watching you. It's none other than Glenn Maxwell, right? None other than Glenn Maxwell. यार कौन हो सकता है यार? इस सीजन he was some surprise package. सब बोल सकते हो और ना भी बोल सकते 50-50 because लास्ट सीजन इतना खराब था उनका with पंजाब किंग्स. एक भी चक्का नहीं आया guys और इस सीजन में पहले ही मैच में 100 मीटर्स का छक्का which means my god right? Yes, so it's none other than Glenn Maxwell and 15 matches, 513 runs and 3 wickets. and जो वो wickets भी लिया था ना वो भी that Virat Kohli just sent Maxwell, he took some 2 wickets in that match, something like that, which was pretty beautiful bowling by him. I don't clearly remember that match but yes. And let's talk about his runs guys. This is the thing which I wanted to talk. So oh my god, मतलब इतने that sweep shots, that reverse sweep, मतलब क्या मस्त मारता है यार. So he might be the toughest person for Australia in this World Cup. For other teams the opponent के लिए tough हो सकता है Glenn Maxwell
बिकॉज नेक्स्ट इंडिया का अगला प्रैक्टिस मैच होने वाले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो देखेंगे कितना क्या बोलते हैं उसको, कितना forgotten the word. Anyways, okay, let's move on to the next one. So let's just see guys, it's 15 matches, 513 runs including 3 wickets, and all rounder. And I think जो इतनी पैसों से आरसीबी ने उनको खरीदा था ना, like 14.5 crores जितना, I think he have fulfilled that amount, right? He have उस amount का क्या बोलते हैं उसको, कि he deserved that much of amount. And I think whenever we talk about Glenn Maxwell, it's all about the budget. इतना hype होता है, the name itself is a huge, like पहले होता था ना कि Chris Gayle आने वाले हैं, like that. So this time is Glenn Maxwell guys. Okay, so let's move on to our third player. Who's gonna be that? I know who's gonna be it. हिंट दे रही हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स से है, तो चेन्नई बोला मैं, मतलब यू कैन सी लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम चेन्नई, यू कैन थिंक ऑफ लॉट ऑफ प्लेयर्स, बट ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जो है उनको आप कैसे भूल सकते हो यार, राइट? यस, इट्स नन अदर देन फाफ डू प्लेसी, इट्स नन अदर देन हिम, राइट? He was the second highest run scorer this season, just by 2 runs से he just lost that one, just by 2 runs. Because if you see Ruturaj Gaikwad, he was something around 635 something, ऐसा कुछ था ना Ruturaj Gaikwad का, something like 635 like that. It was something of Ruturaj Gaikwad, but for Faf du Plessis it's 633, and a wonderful batsman, because the कोई नहीं, because he's not a bowler. And I think I just wanted to say one thing about Faf. I think his fielding, he's that super duper fielder, including Ravindra Jadeja. Who can forget Ravindra Jadeja's fielding? So he is the same one who always brings up that energy in the field. Yes, so the next person is giving you the hint, okay? It's from RCB, Royal Challengers Bangalore. I just gave you the hint that he's from Royal Challengers Bangalore, and you need to think about him. Can you see him anywhere here? No. Let's see him down. It's none other than Yuzvendra Chahal, because I picked him. See, his first half was not that great. He was not selected to the World Cup. मुझे पता भी नहीं इतना क्या बुरा कर दिया था यूजी चहल ने. But I think in press conference में विराट कोहली ने बोला था ना कि it was challenging to not to take Yuzvendra Chahal. It was very challenging, but he backed Rahul Chahar. He thought he has some exceptional bowling, so he wanted Rahul Chahar to come, and I don't disagree with him, because that's true, right? You sometimes want to give to the youngsters, they come, they perform. वैसा तो प्रैक्टिस मैच में राहुल चहर ने इतना बॉलिंग भी नहीं अच्छा किया था, 45 रन जितना तो दे दिया था. एनीवेज, यू कांट जस्ट डू लाइक दिस, ओके? प्लेयर का कभी कभी टाइम आता है प्रूव करने के लिए, रुको जरा. ओके, एनीवेज, सी, it's Yuzvendra Chahal, 15 matches, 10 runs and 18 wickets. So 18 wickets 15 matches से, मतलब पहले से भी खेल रहा था. और the first half wasn't that great for Yuzvendra Chahal, because I just wanted to say कि इतना भी अच्छा नहीं था Yuzvendra Chahal के लिए the first half, because he didn't took that much any wicket. But the second half was a turning point for him, guys. It was a turning point for him. You just look at it, 15 matches, 10 runs and 18 wickets. 18 wickets this is the thing to be noted. So a very very wonderful bowling. Whenever the tough times comes, the captain always calls Yuzvendra Chahal, and I truly believe that he is the game changer for RCB, including with Harshal Patel. So exceptional 18 wickets. This is the fantastic wickets by Yuzvendra Chahal. Fantastic, right? Let's move on to our next player, the next IPL team. Let's move on. So who's gonna be? So this is gonna be the 5th one, right? In 5th one I have 2. Part 1, part 2. I always get confused in 5th one. I compared it very very carefully. Can't do anything. You see and you see me, okay? Yes, so the 5th one, part 1 and 5th. Okay, so the 5th one is from this team.
this team, this Chennai Super Kings. You can see this player, okay? If I move my photo, you can see him. I'm closing it. Okay, so it's none other than Ravindra Jadeja. Okay, it's none other than Ravindra Jadeja and his exceptional fielding, running, runs and wickets. See, I have taken Ravindra Jadeja because there are a lot of players who I have taken. They are batsmen, they make runs and they just take few wickets somehow, all-rounders. But if you see Ravindra Jadeja, runs भी 200 से ऊपर और विकेट्स भी 13 विकेट्स is not less than a perfect bowler. So इसीलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट आई थॉट कि रविंद्र जडेजा को मैं ना लूँ, पर उसके बाद जब मैंने स्टैट्स देखा था मुझे लगा यशस्वी क्या हुआ, तू भूल गए क्या मैच को, इसीलिए तो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माय ओपिनियन and to pick Ravindra Jadeja. 16 matches to 27 runs, 13 wickets, and these wickets are very highlighting, including with this runs as well, right? These two things are phenomenal. Anyway, so his wonderful performance has always been on the top class. Let's move on to our fifth में भी मुझे जो मैंने बोला था ना कि confusion है, तो the fifth दिल्ली कैपिटल्स. क्या दिल्ली कैपिटल से एक बंदा का नाम तो आना ही चाहिए था, और यू कैन सी हिम हियर, बट इस पे नहीं, इसमें it's none other than Shikhar Dhawan, guys. It's none other than Shikhar Dhawan. Yes, I took his name because I was pretty confused between these two, because Shikhar Dhawan scored 587 runs and Ravindra Jadeja who made 227 runs including a wicket. तो इसीलिए मैं confused हो गई थी कि दोनों में से मैं किसको लूँ. That's why I just got confused. But I thought कि मेरे पास दो options है तो मैं क्यों ना ले लूँ, तो इसीलिए I took Shikhar Dhawan as well. I took him in the team in my top 5 performances. So let's talk about his exceptional 557. So always been that exceptional player for Delhi Capitals. Before he used to play like confused हो रहा कि SRS को खेल रहा था, DC SRS DC, तो finally he is in DC. Okay, so 587 runs. Sorry मैंने अगर गलत बोल दिया तो 587 runs and wonderful. हाँ, in the qualifier 2 में the people were saying like he's playing as a test match, he is scoring very low runs. But guys, sometimes you need to do like that. Sometimes it goes correctly, but for him it went wrong, right? Okay, so this is what my picks are. I just wanted to say it again. KL Rahul, Glenn Maxwell, Faf du Plessis, Yuzvendra Chahal, Ravindra Jadeja and Shikhar Dhawan, right? So this is the end of this video, but before leaving, हाँ, जो मैंने पहला बोला था ना कि why I didn't make a video on practice match, I just wanted to tell that why मैंने video नहीं बनाया था. तो देखो guys, I didn't watch that practice match. हाँ, मैंने practice match नहीं देखा था, और I didn't officially open my Hotstar and उसमें match मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था. I was just seeing the score, मतलब हाँ, I went to Google and I was seeing the score. मैं ऐसा देख रही थी मैच, तो that's why see, जैसा भी देखो you need to know, no, see highlights. हाँ, मैंने ज़रूर highlights देखा, पर highlights में क्या दिखाते हैं यार, विकेट गिरा वो दिखा देते हैं, उसके बाद जो रन्स हुआ 6 आउट वो सब दिखा देते हैं, पर मैच में थोड़ी बहुत फननेस भी होती है, ऐसा कुछ भी होता है ना, वो सब कुछ हमको नहीं देखने मिलता है हाईलाइट्स में. तो इसीलिए मैंने हाईलाइट्स पर बेस करके मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता नहीं. सी देखो, मैंने ये तो मुझे पता है कि राहुल चौहान ने 45 जितना रन्स दिया, पर उस रन्स कौन से ओवर में, उतना सबसे ज़्यादा कौन से ओवर में रन्स दे दिया वो मुझे नहीं पता ना, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया. और प्रैक्टिस मैच 2 के भी आपको वीडियो नहीं आएंगे, डायरेक्ट आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आएगा. सो प्रैक्टिस मैच 1-2 में इसीलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि आई हैव work to do, like couldn't make the video about that one. So this is what I wanted to say कि मैंने क्यों practice match पर video नहीं बनाया.
सो आई जस्ट होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड क्यों मैंने नहीं बनाया, और आपको एक भी वीडियो का क्या बोलते उसको प्रीव्यू आप लोगों को नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज आई एम दैट पर्सन हु डजंट प्रिडिक्ट मोर, लाइक हाँ आई लव टू प्रिडिक्ट, आई कैन प्रिडिक्ट समटाइम्स, बट कभी कभी मुझे प्रिडिक्ट करना भी इतना अच्छा नहीं लगता, तो डायरेक्ट मैं मैच में जाती हूँ और दैट्स इट। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस मैच का वीडियो नहीं बनाया और सेकेंड प्रैक्टिस मैच का भी नहीं आएगा। हाँ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ज़रूर आएगा गाइस, क्यों नहीं आएगा उस वीडियो का, मैं कैसे बोल सकती हूँ यार। अभी तक तो मैंने पाकिस्तान इंडिया का लाइव तो कभी बार नहीं देखा, मतलब हॉस्टल में इतना भी नहीं देखा मैं, तो दैट्स वाई, and I'll be very very excited to see Babar Azam and Virat Kohli, like how do they will captain the team, what's their point of view, those all. So that's it, कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो रही है, okay, so okay, that's it and see you in, so this is the end of the IPL, okay, इसके बाद आपको कोई भी एक भी वीडियो आपको IPL के ऊपर नहीं आएगा, दिस इज द एंड ऑफ IPL प्लेलिस्ट में भी, और आपको सीधा आएगा अगली साल। ऑक्शन, मेगा ऑक्शन सब होता है या फिर न्यू टीम अनाउंस होती है, जो न्यू टीम्स अक्टूबर 25 को, तब मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, राइट। ऐसा कुछ जल्दी सरप्राइजिंग ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो वैसा मैं वीडियो बनाती हूँ, बट ऐसा एनालिसिस टॉप परफॉर्मेंसेस, दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट, एंड इफ देयर इज द टीम अनाउंसमेंट, न्यू टीम्स और मेगा ऑक्शन, वो सब कुछ मैं वीडियो बनाती हूँ। For the IPL point of view, this is the end of the matches and the video about the matches, okay? So now begins the World Cricket, the bang. Okay, so that's it guys, I hope you have enjoyed this video, so like, share and subscribe to my channel. Don't forget to subscribe, jaldi karo subscribe. So that's it, and so in some other analysis video, my ending is getting bored, right? I need to change it anyway, so watch the outro and bye guys, see you, take care.